Good morning. So, in yesterday's class, we have solved some problems like how to find the unknown forces when the resultant is given. To be specific, when the resultant is inclined at some angle theta. So, if in the question it is given that find the force such that the resultant is inclined at some angle theta, we will have only two conditions, and the condition is summation of fx will be equal to rx and summation of fy will be equal to ry, where summation of fx is what? Adding all the forces in x direction. And what is rx? Rx is the component of resultant in x direction. So I will just quickly write it here what the condition was we have used. Summation of fx is equal to rx and summation of fy will be equal to ry. Okay, so I hope, and we have solved some one or two problems on this. So I think there is no issue now. And now with this, let us go forward into the topic. And the next topic is this one. What do you mean by movement of a force? The turning, in the simple form I can write, the turning effect of a body about a given point is known as movement of force in simple terms. Okay, so let us say this is your hand, and let us say this is your elbow part, this part. So about this point, about this elbow part, can you not move your hand? Can you not rotate your hand? Is it? Yes, sir. Yes. Okay. Can you rotate your wrist from this point, from here? Yes. Yes, sir. Can you rotate your hand from this part? No, sir. No. Okay, so that is the thing. If you want to understand the concept of movement of the body, it is saying that the turning effect of a body about a given point. कौन सी पॉइंट से आप बॉडी को टर्न करना चाहते हो? तो यहां से अगर मैं टर्न करूंगा, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, एल्बो पॉइंट, तो मेरा टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, बराबर, क्योंकि लेंथ ज्यादा है. देखो, अगर मैं टर्निंग कर रहा हूं इस पॉइंट से, तो मेरा सर्कल ऐसा बनेगा. यस सर. ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे इसको वृष्ट के अबाउट घुमाना है, तो वो कितना घूमेगा? सिर्फ इतना ही, उससे ज्यादा घुमा पाओगे क्या आप? नो सर. नहीं. सो कैन यू इमेजिन और कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई द मूवमेंट और द पॉइंट ऑफ मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट? कहां से आप बॉडी को रोटेट कर रहे हो? अगर मैं पॉइंट नंबर 1 से रोटेट कर रहा हूं, सो आई कैन रोटेट इट दिस मच, जो बड़ा वाला सर्कल है. बट इफ आई गो एंड रोटेट इट अबाउट सेकंड पॉइंट, आई कैन रोटेट ओनली दिस मच. एंड इफ आई गो अबाउट थर्ड पॉइंट, आई कैन हैव रोटेशन 0. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So it is. Yes, So you sir. can say movement of a force is turning effect. In simple terms, it is a turning effect of a body about a given point. That's the most important thing. That's why I have highlighted it in red. Every time if you hear the word movement, you have to ask me, sir, about which point. So this was in terms of statement form. Now, if I want to write it in the mathematical form. Now, if I want to find out the value, there should be having some mathematical formula. Mathematical formula for movement is equal to force multiplied by perpendicular distance. Again, I will highlight on this word. So movement is force multiplied by the perpendicular distance. So now let us say here it is a beam and here it is a force. ये force है 20 Newton. Okay, and let us say this is point B, and I want the turning effect of this force. What will be your answer? What will be your first question to me? Reference point. Reference point. Okay, so my reference point I am giving you. I want the answer of turning moment about this point A. Now, can you not assume? Or just imagine कि मेरी ये point fixed है, ये point fixed है और मैं यहाँ पर load लगा दूँ, ये ऐसे झुकेगा नीचे, turn ऐसा होगा, yes or no? Yes, sir. Correct. Yes, sir. So that means it is giving a turning effect. अब वो turning effect कितना है? What is the value? So what does the formula says? The moment value or the value will be force multiplied by the which distance? Perpendicular distance. Okay. So now if I can write for this case, I will write moment is equal to the value of force is given to me as 20 multiplied by. What do you understand by perpendicular distance? Sir, the 90 degree distance. Okay, Distance good. from 6. Perpendicular means तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है 90 degree. That is correct. Distance between A and B, correct. Now I will give you one hint. अगर force vertical है, okay, I am telling you हिंदी, English में भी नहीं बोल रहा हूँ. अगर force vertical है, तो आप लोग लोगे horizontal distance. Okay, that is nothing but the perpendicular distance. यहाँ पर हमारा force y में है, yes or no?
Direction of Yes, force is in Yes, y yes, direction. sir. अगर force Yes. y direction में है, then you take the distance along x axis. That means this distance. So let us say I am giving you this 2 meters. Okay. So here it will be 20 multiplied by 2 and answer will be 40. Getting तो it? मतलब फोर्स से परपेंडिकुलर ही लेने का। एक्चुअली इट इज फोर्स से परपेंडिकुलर है। देखो अगर मैं ये 90 डिग्री यहाँ बनाऊंगा तो ये फोर्स से परपेंडिकुलर होना है ना, ये डिस्टेंस, ये लाइन और ये दोनों एक फोर्स से ही तो परपेंडिकुलर है एक्चुअली। अंडरस्टूड? हाँ सर। अब देखो दूसरा केस, लेट अस से अब मेरा पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर ए विच इज अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड लेट अस से दिस इज पॉइंट बी एंड द फोर्स इज एक्टिंग हियर 20 न्यूटन. Okay, same case I am taking. Now, if I am taking movement about point A, this rod will move like this. ऐसा घूमेगा, yes or no? Yes, sir. That means there is some Yes. turning movement. अब वो turning movement का value कितना है? So now you can see your force is in which direction? Force कौन से direction में? Horizontal direction. X Horizontal में या Y में? X में. X Force direction. X में, तो perpendicular distance क्या हो जाएगा? Y का. So I Y need का. this distance in Y direction. So let us say if this is given Yes. to me as 3 meters. So answer will be Yeah. 20 multiplied by 3, which is 60. equal to 60. Understood? 60. Yeah, sir. Okay. Yes, sir. So basically movement is force multiplied by perpendicular distance. And in simple terms, what is perpendicular distance? कि अगर force x में है तो आप distance y में लो, अगर force y में है तो आप distance x में लो. याद रहेगा? Yes, sir. There are two types of movements. One is clockwise movement and one is anti-clockwise movement. तो अभी आपको जो मैंने बताया वो ये फोर्स का डायरेक्शन में नीचे की तरफ रखा था. सो यू टोल्ड दैट दिस बॉडी विल मूव लाइक दिस, करेक्ट, इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ रोटेशन? इज इट मूविंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज. देखो तरीके से घूमना है, ठीक है. सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज क्लॉकवाइज मूवमेंट. ओके. एंड लेट अस से इफ आई गिव यू फोर्स लाइक दिस, लेट अस से आई गिव यू फोर्स लाइक दिस. एक फोर्स लेट अस से यहाँ पर है 30 न्यूटन का. Now this force will have the tendency to rotate the bar in this direction ऐसे, yes or no? Yes, sir. Force अगर ऊपर है तो बीम को भी, वो बॉडी को भी ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा. Now you can see that this direction is which, anti-clockwise or clockwise? Anti-clockwise. 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 So this are nothing but the types of movements: clockwise movement and anti-clockwise movement. So now here I will write clockwise movement. When a body rotates in clockwise direction, it's a very simple definition. When a body rotates in clockwise direction due to application of force, then that movement is termed as clockwise movement. किसी को डाउट है definition में? No, sir. Now regarding the sign conventions, I will follow this. Clockwise movement are considered negative, but this is not the fixed one. ठीक है, हर बुक्स में अलग अलग देता है. कोई बोलता है क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसीडर करो, कोई बोलता है क्लॉकवाइज नेगेटिव कंसीडर करो. इट डिपेंड्स ऑन अस. बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ यू आर टेकिंग क्लॉकवाइज एज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज शुड बी कंसीडर्ड व्हाट? पॉजिटिव. पॉजिटिव. अगर आप लोग बोलोगे सर मुझे क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, मैं बोलूंगा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एंटी क्लॉकवाइज आप लोग क्या लोगे फिर? नेगेटिव. ठीक है. So there is no fixed sign convention for clockwise and anti-clockwise. It depends on you, whatever you want to decide. But for uniformity in our class, I will be following this one, that consider all the clockwise movement as negatives. Whereas we will see the definition of anti-clockwise movement. So anti-clockwise movement is when a body rotates in anti-clockwise direction due to application of force, then the movement is considered to be as anti-clockwise. So I think it is simple now to understand. Yes, sir. Yes. Okay. And then the sign convention, anti-clockwise movement are considered positive. Because I have considered clockwise as negative, I am considering anti-clockwise as positive.